Hello students, I'm back again with a new presentation. This presentation is for class 5, subject English literature. This is our chapter 2, Go Green, Go Smart, and this is our lecture number 12, and I'm Vatika. Let's start with the presentation. This is a chapter about a little boy whose name is Kushagra. Kushagra is a boy of class 5. He is very intelligent. Look, there picture is given of Kushagra. Once Kushagra went to the market with his mother and saw that the road was littered with all kinds of refuse, means waste material. Kushagra saw that all waste material was littered on the road. सारा वेस्ट मटीरियल कचरा रोड पर फैला हुआ था. He was worried to see all this. उसको ये सभी देखकर बहुत चिंता हुई. Then they went little further and saw 2 different colored bins. फिर वो थोड़ी आगे गए और उन्होंने देखे 2 different colored bins. 2 अलग अलग कलर के बिन्स मीन्स डस्टबिन. इन वन कॉर्नर ऑफ द रोड. कुशाग्र आस्क्ड हिज मदर अबाउट दीज बिन्स. कुशाग्र ने अपनी मदर से इन बिन्स के बारे में पूछा. द मदर टोल्ड हिम अबाउट reduce, reuse and recycle, the 3 R's of the environment. उसकी मम्मी ने उसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में बताया. द ग्रीन बिन वॉज केप्ट फॉर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स एंड ब्लू वॉज केप्ट फॉर द आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. ग्रीन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के लिए था और ब्लू था रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के लिए. लुक, this is the sign of reduce, reuse and recycle, the 3 R's. Next day Kushagra went to school. अगले दिन कुशाग्र स्कूल गया and their teacher told them that their school is going to celebrate Green Week and she discussed about the ways to reduce waste. और उनकी टीचर ने उनसे डिस्कस किए वेज मीन्स तरीके टू रिड्यूस द वेस्ट. वेस्ट को, कचरे को रिड्यूस करने के लिए दे डिस्कस्ड अबाउट द वेज. हाउ एनरिचिंग एंड एक्साइटिंग द सेशन वॉज. द सेशन टेकन बाय देयर टीचर वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड एनरिचिंग. द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट that and were excited and took part in the discussion enthusiastically and they gave their suggestions too. Students were very happy. बच्चे बहुत ही खुश थे और बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्सुक थे उस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए. एंड दे टुक पार्ट, और उन्होंने बहुत ही एंथुजियास्टिकली, उत्सुकता से पार्ट लिया भी. एंड दे गेव देयर सजेशंस टू, उन्होंने अपने सजेशंस भी दिए. Kushagra advised all to use the reverse of printouts for rough work. कुशाग्र ने एडवाइस किया कि all of them can use, सभी बच्चे अपने किसी भी प्रिंट आउट का रिवर्स साइड मीन्स बैक साइड रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं. Mehak advised to use cloth napkin and reusable plates in place of disposable plates and napkins. महक ने एडवाइस किया दैट दे कैन यूज क्लॉथ नैपकिन इन प्लेस ऑफ टिश्यू एंड रीयूजेबल प्लेट्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स. शीना रिक्वेस्टेड ऑल टू ब्रिंग देयर ओन बॉटल्स एंड अवॉइड यूजिंग पैकेज्ड वाटर. शीना ने रिक्वेस्ट की दैट दे all can bring their own bottles, own water bottles in place of packaged drinking water. At last, और सबसे लास्ट में, everybody liked पुरु's idea. पुरु का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा. of celebrating Earth Hour every month. अर्थ आवर सेलिब्रेट करने का.
By the end of the class, everyone was happy and full of green ideas. और जब तक क्लास ख़त्म होती हर बच्चा बहुत ही खुश था and they were full of green ideas. Everybody was having many ideas too. After going home, Kushag wrote in his diary about the 3 hours happily. घर जाने के बाद कुशागर ने अपनी डायरी में 3 hours के बारे में लिखा. Now we will learn word meanings of the chapter. First word is peep, झांकना, littered, कूड़ा करकट, refuse, कचरा, horrifying, भयावह या डरावना, curious, उत्सुक. रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना, रीसाइकल, पुनः चक्रित करना, कायस्क, बूथ, कंक्लूडेड, खत्म किया, अपलोडेड, तालियां बजाई या सराहना की. Okay students, now we will do book exercises of the chapter. We are going to start with exercise number A. This is your exercise A. Show what you know. Now as you have read the chapter, you have revised the chapter, and now you can answer these questions. Read the questions and choose the best option to answer. Now you have to read the given questions and you have to choose the answer. You have given 2 answers in after every question you have to select one answer from them. Your class is going for a picnic. You are planning your tiffin. What would you prefer? Okay, आपकी क्लास पिकनिक के लिए जा रही है and you have to plan your tiffin. आपको अपना टिफिन प्लान करना है, पैक करना है. What would you prefer? तुम क्या ले जाना प्रेफर करोगे? Fruits cut and wrapped in aluminium foil, disposable plates, cold drink bottles, sandwiches wrapped in sling film. Okay, you will choose the first option. Or whole fruit, washable plates, fresh juice in Tetra packs, sandwiches and stuffed parathas kept in reusable tiffins. Or this. I have chosen B answer. You can choose your answer. Next, you want to buy a new school bag. What will you look for? आपको एक नया स्कूल बैग खरीदना है. आप इनमें से कौन सा खरीदोगे? A bag with attractive design, modest price tag and capacity. Or B option, a bag with sturdiness, durability, capacity and usefulness. I have chosen B option. You can choose yours. As you all know, after the end of every chapter, every lecture I give you some homework. So in this also I am giving you this homework. This is your exercise C. It is your exercise of your book. Read the following extract and answer the question that follow. You have to read the given lines and you have to answer the questions. How enriching and exciting the session was. How enriching and exciting the session was. Who spoke these lines? What was the session about? What made the session enriching and exciting? Okay, you have to listen to the lecture again for these